The topic we are going to discuss about is chemistry of hydrocarbons, and the subtopic is acidic nature of alkynes. So let's discuss about the acidic nature of alkynes. In ethyne and other terminal alkynes like propyne, hydrogen atom is bonded to carbon atom with sps overlap. जो टर्मिनल alkyne या इथाइन में हाइड्रोजन कार्बन के साथ sps overlap के जरिए लिंक होता है. एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वी ऑल नो कि उसमें 50% s करेक्टर होता है और 50% p करेक्टर होता है, जिसकी वजह से कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है देन sp3 या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से. sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पुल्स इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक हो जाता है. Let's see some reactions. जब वन अल्काइन और इथाइन को सोडामाइड एंड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं या फिर मोल्टन सोडियम के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, इट yield alkylides or acetylides. So here we have a terminal alkyne treated with sodamide yield this kind of product. लेकिन जब हम उसको सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हैं, मोल्टन सोडियम के साथ, it will yield sodium acetylide plus H2. Next, sodium acetylide is very valuable reagent for chemical synthesis and essentially ionic in nature. Previously जो हमने product बनाया था, that was sodium acetylide. It has its importance in chemical synthesis and it is ionic in nature. Next are the silver and copper acetylides. Acetylides of copper and silver are obtained by passing acetylene in ammoniacal solution of cuprous chloride in order to yield copper acetylide and silver nitride in order to yield silver acetylide. So here we have reactions. जब हम इथाइन को cuprous chloride के साथ react करवाते हैं in the presence of ammoniacal solution, so we get a dicopper acetylide जो कि reddish brown होता है. So copper का color reddish होता है, इसलिए it will get a reddish brown color. लेकिन जब हम इथाइन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रेड करवाते हैं, इट यील्ड डाइसिल्वर एसिटाइलाइड जिसका व्हाइट कलर होता है. सिल्वर व्हाइटिश कलर भी होती है, सो इट विल गेट अ कलर व्हाइट. Next is regeneration. Silver and copper acetylides react with acids to regenerate alkynes. जब हम acetylides को acids के साथ react करवाते हैं, they will yield alkynes. So here we have disilver acetylide react with H2SO4, ethyne regenerate हो जाएगा and it will form silver sulfate. And यहाँ पे we have silver disilver acetylide react with 2HNO3. या आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा दें या आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवा दें, it will yield ethynes or alkynes back. So let's see their importance. Alkylides are used for the preparation, purification, and separation, identification of alkynes. So alkynes की identification के लिए, separation के लिए, purification के लिए और preparation के लिए हम alkylides को use करते हैं. So this was all about the acidic nature of alkynes. I hope you have understood it well and thank you so much.